Sex work should be legalized or not. A very sensitive topic for a parley, but much needed. Now this video will be an open exchange of views. यहाँ पर हम किसी yes या no question का जवाब देने नहीं आए हैं. We will proceed in both the directions because views are even against as well as in favor of this topic, and you guys have to decide which way to go. But before proceeding, we have to understand कि sex work क्या है and who the workers are. Sex work is basically an exchange of consensual sexual services or erotic performances on the basis of which the adults or the sex workers they get paid. In countries like Germany, France and Canada, sex work is legal. This also includes the country, our country of India. Yup, you heard that right. Sex work is legal in India, but you have to understand its limits. इंडिया में सेक्स वर्क लीगल है, but various aspects of sex work, for example pimping and pandering, soliciting, curb crawling, child prostitution, owning and managing a brothel, ये सारी activities, these are strictly illegal. Now legalization of sex work in many countries is a very heated issue. Therefore, various affirmations have been established even in against and even in favor of this topic. Let us first consider the views which are in favor of this subject. If sex work is criminalized, it will directly affect the health and safety of the sex workers. क्योंकि यदि legalization नहीं होता है तो sex work will be rendered underground and इससे sex workers की health को काफी नुकसान होगा. Secondly, ऐसे बहुत सारे sex workers हैं जो various fields में, various settings में, they report issues of extreme violence and harassment from the managers, clients, police and even the society. And अगर sex work criminalize कर दिया गया तो ये अपने issues को कैसे report करेंगे? How will they fight for their rights? It will directly affect their safety and their health. Now ऐसे कुछ लोग हैं who think that if sex work is criminalized, it will be in the benefit of the sex workers and it will as well as help in curbing the activities associated with sex work to an extent. ये तो वही बात हो गई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन ये बात हर जगह सही साबित नहीं होती. If sex work is criminalized, it will further push away the sex workers from safety, from their proper health conditions. For example, in France, जब 2016 में purchase of sexual services was outlawed, it was banned, then ये expect किया गया था कि इससे sex workers का भला होगा और sex work की activity पर भी थोड़ी सी limit लगेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा. According to a survey, in the past 2 years, the living conditions of the sex workers further deteriorated. उनके अगेंस्ट जो वायलेंस होते थे, उनके अगेंस्ट जो हैरेसमेंट होता था, उन सब का रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. एंड देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स इन मेनी अदर कंट्रीज. नाउ हियर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्टैंड्स आउट. वी हैव टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्स वर्कर्स. देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ इट एंड हमें उनके लिए एक ऐसी लाइफ इंश्योर करनी होगी जहां पर उनकी सभी फंडामेंटल राइट्स एंड उनकी डिग्निटी प्रोटेक्टेड रहे. The NHRC or the National Human Rights Commission of India in October 2020 listed the sex workers at women at work or informal workers. And उन्होंने state government को ये order pass किया था that each and every person associated with sex work should be provided with proper welfare measures, proper documentation, assistance, relief, and free healthcare services. Now we have understood the first part of our story. Now we can even ponder upon the against factor of the subject. The first one being sex trafficking. Sex work promotes it. In Netherlands, when sex work was legalized,
victims of sex trafficking or human trafficking were increased drastically. And same was the case with Germany, Australia, and even the state of Victoria. If sex work is decriminalized, तो वो child prostitution को भी बढ़ावा देगा. In Netherlands in 1990s, जब sex work को legalize किया गया था, तो child prostitution के victims का number बहुत ज़्यादा increase हो गया था. And same was the case in the state of Victoria too when sex work was legalized. And ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक आखिरी बहुत important aspect. If legalization of sex work is implemented, यदि उस पर कोई बैन नहीं लगाया जाता है, तो it will increase the demand of it. Not only the purchase of sexual services by men or women both will be increased in a more permissible range, in a more permissible way, but it will also draw many people towards this profession. Take it this way. हम लोग क्या करते हैं? अगर हमारे पास एक आसान रास्ता और एक मुश्किल रास्ता हुआ तो हम किसे चुनते हैं? Obviously हम लोग एक आसान रास्ते की तरफ जाते हैं. यदि हमारे पास ऑप्शन है कि अगर एक मेड हमारे घर में हमारा सारा काम करके चली जाए तो हम उसे चूज करेंगे. अगर हमारे पास एक एलिवेटर और सीढ़ियों में ऑप्शन है तो हम लोग एलिवेटर को चूज करना पसंद करेंगे. एंड इस केस में भी ऐसा ही होगा. आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई हो. देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. अगर एक चीज की अच्छाइयां हैं तो उसकी बुराइयां भी होती हैं. इंडिया में, और ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि और भी देशों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सेक्स वर्क को लीगलाइज होता हुआ देखना चाहते हैं. लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस पर बैन लगा हुआ देखना चाहते हैं. अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं. अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी, कुछ अच्छी बातें जानने को मिली होंगी, विच विल हेल्प यू फ्रेम योर थॉट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही.